Hello, beautiful people. New day, new me with my old habits. Trying to improve daily, but कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है. Like when you try to put some changes in your life, I've noticed that your brain start tricking you. Like it start telling you कि नहीं ये तुम्हारे लिए गलत है, ये मत करो. Like जब जब मैं अब like I used to be a very athletic person, but the 9 to 5 made me so physically weak that सीढ़ियों से मुझे चढ़ते ही मेरी सांस फूलने लग जाती है. And this is very heartbreaking for me because I used to be a judo player. I am a state level judo player. uh, I used to be a very athletic person. और अभी खुद को जब देखता हूँ ऐसे like वो कहते हैं ना, once you see the potential in you and now like you realize that you are not the same person. That's much more heartbreaking than being a person who never seen his potential. like तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो, तुमने किया है, और अभी इस पॉइंट पे तुम वो नहीं, कुछ तुम उसके 0.1% भी पास नहीं हो. That really break a man, a person in general. So yeah, I have decided to start something new. But one thing I have realized is everything in a life is depend on only one factor, only one thing, that is discipline. You need to build a sense of discipline in you. No matter what you do, how big, how small thing you do, you should build that discipline in you. Once that discipline is built, nothing can hold you back and nothing can stop you from achieving what you want to. So वो कहते हैं ना, आदमी गरीब होए तो उसके आदत से होए. वही बात है. अगर तुम अपनी आदत नहीं बदल दी तो तुम्हारी आदतें तुम्हें बदल देंगी, और हम तो नहीं बदलने वाले अपने आदतों से. इसलिए फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई आदत. सो व्हाट आई डू फ्रॉम टुमारो, आई स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन. नो मैटर कितना वर्कआउट कर पा रहा हो, कितनी. दिस इज माई करंट कंडीशन. दिस यूज टू बी लिटिल मोर बिगर. जैसे शोल्डर अच्छे से डिफाइन हो रहे थे, ये विल सी मी. नाउ आई एम बिकम अ स्किनी बिच, एंड नेवर बी अ स्किनी बिच. बीइंग अ skinny bitch is a very bitchy thing you can do, and don't be a bitch, you bitch. I am a bitch. The fuck. Okay, so let's see how it goes. And the most important thing, for some reason अगर किसी दिन कभी मैं कुछ फॉलो नहीं कर पाया तो इट्स ओके. आई एम बिल्डिंग अ न्यू हैबिट, आई एम स्टार्टिंग माई लाइफ अगेन. एक दिन में सब चीज़ें ठीक नहीं होगी, एक महीने में सारी चीज़ें सही नहीं होगी, एक साल में नहीं होगी. गैप आएगा, सब होगा, बट you have to stand up and start working on yourself again and again and again. ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होना चाहिए, ना सीधा, ना ऊपर ना नीचे. अगर वो ऊपर ही जाएगा तो लाइफ से थ्रिल चली जाएगी, अगर नीचे ही जाएगा तो लाइफ से मोटिवेशन चला जाएगा, और सीधा ही जाएगा तो इवेंचुअली वी आर डेड. व्हाट द फक जस्ट आई सेड. Just like your heart beats on that what you call, I don't know, no hospital. So your life should go up and down, up and down, up and down, so that you can be alive. I know my English is very poor, but my confidence is killing this. Yes, I am here for this only. I don't mind if you judge me on my English, if you judge me on my anything, because I know I'm far better in many different things than many of you. So English is just what you say, part of my life, not a just a part of my life, not a major part of my life. Just little medium to connect with you guys. And I am specifically doing this in English because I want to improve my English. So let's see how it goes. I'll keep you updated. And if you want to be a part of my journey, so let's do it together. Just come here, and if you have any suggestions that we can together implement and improve our life, let's do it. एक ही जिंदगी मिली है, सब ट्राई करेंगे. बाय बाय.